Okay, we're live. Hi, hello everyone. Hi, how are you, Urvashi? I'm good. How are you, Nupur? I'm good. It just rained here, so I'm happy. Yeah, it rained here in the morning and then it's all sunny. So again, Oh, back to our hot climate. oh my God. It's really hot. I don't know if it's just this year or maybe every year it's hot, but we forget by the time the summer is over. Oh, it is so much humid and so much hot. Like you Yeah, feel like you will just melt away. yeah, that's the word, right? And I mean, in Ahmedabad, you were telling me it's like 44 degrees, right? Yeah, it reaches to 44, 45 that point. May is the hottest month, and then still that till the time we start having rains, so Correct. it keeps fluctuating. That's crazy. I mean, I thought like here, I think it's about 32, 35. It's a little bit cooler. I mean, can't say cooler, but it's a little bit better in the last few days. गर्मी तो है. That's good. हाँ, गर्मी तो अभी रहेगी. Correct. Okay, for those of our friends who are watching, please let us know in the comments if you can see us and hear us. And Yeah, if there is any lag from the network, we'll just rearrange the things. all right, so Okay, you guys, we are yeah, good. yeah, go ahead, Urvashi. Yeah, so we are good at least. They can hear and watch us. Correct. Okay, awesome. Good to see you all. Um, Rimi, Natasha, Ravinder, lovely to hear from all of you. And, you know, another Sunday, another workshop. Every Sunday, 5 p.m. is when all of us meet here virtually. And while we may not get a chance to physically always meet each other because we are all, located in different parts of the country or different parts of the world, it's just amazing how social media has brought us all together on this platform. And brings us here today with you to talk to you about bolus insulin. So अगर आपके कुछ सवाल हो आप या आपके कुछ कमेंट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें वी विल बी डूइंग दिस वर्कशॉप इन अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी so that maximum people can understand. All right. Natasha says, is it on every Sunday? I'm new to the group. Yes, Natasha. Also, tell us what type of diabetes you live with, or, are you a caregiver to someone with diabetes? So, we do these workshops every Sunday. We've been doing it continuously for the past 3 years. So, अभी तक 200 से ज़्यादा workshops करे हैं हम लोगों ने and I think what's really amazing, Urvashi, I feel that all of these workshops are done by diabetics. I mean, every single workshop that's happened till date has been facilitated, thought of, organized by somebody who lives with diabetes. So these are workshops by the people and for the people, and that's really my favorite part about the Blue Circle workshops. That actually helps. Getting the first hand experience from people, listening to them is actually very helpful because there are many things, which doctors even can not tell us. And we Correct. are left behind and we are still, in chaos कि क्या हो रहा है हमारे साथ में. तो कम्युनिटी डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है. Exactly. And in the meanwhile, I can see people are streaming in and they're coming in and joining the session. So a quick, good evening to everyone who has just joined us. Urvashi and me, I'm Nupur. We are going to be talking today about bolus insulins. तो हम आज चर्चा करेंगे बोलिस इंसुलिन के बारे में अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना टाइप ऑफ डायबिटीज शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं यू कैन टेल अस व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज यू लिव विथ एंड इफ यू आर इंसुलिन डिपेंडेंट सो दैट विल बी अ गुड sort of start to this whole conversation. And I think Urvashi and me will also introduce ourselves. So Urvashi, you want to go first? Sure.
हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। मेरा नाम उर्वशी है और मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। पिछले साल डायग्नोस हुआ था। अब 15 महीने हो गए हैं मैं डायबिटीज़ के साथ रह रही हूँ। मैं एक अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आई एम अ फैकल्टी इन द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। Thank you, Urvashi, and I think we got the perfect person, a communication specialist for our workshop today to communicate effectively, to all our viewers and share our experiences. So my name is Nupur, and I've been living with type 1 diabetes for the past 28 years. मुझे पिछले 28 साल से type 1 diabetes है. Um, उर्वशी की तरह ही मैं भी टाइप 1 हूँ और हम लोग इंसुलिन यूज़ करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि जो कोई आज हमारे साथ व्यूअर्स हैं कैन बी अ मिक्स ऑफ टाइप 1, टाइप 2 और एनी अदर टाइप्स. So tell us in the comments what type of diabetes you have and if you're using insulin, what are your challenges, and we'll quickly jump into each of these comments and discussions. So I see a comment. Please speak about how to titrate the dose, that is blood sugar level and insulin dose. That's a great question. Definitely, we'll be talking about that. I also see Natasha here who says, I'm T1 since 96, diagnosed at the age of 8. And Natasha was on MDI since 2021, until 2021, and then on the pump. And still learning about pump and bolus usage. Chirag, good to see you. And Chirag wants us to discuss about rapid versus fast acting and how would the usage differ with people of different age groups. Chirag is T1 since 15 years. Awesome. So I think we're off to a great start, and I'm really excited that we're going to be sharing all our experiences here with you today. And Urvashi is going to remind me if I start rambling too much to stick to the to stick to the plan and stick to the topic. But let's begin by bolus. क्या होता है? What is bolus insulin, right? And I think bolus, basal, ये जो सारे words हैं काफी नए हैं. I mean, if you talk about people that were diagnosed very long back, I can see Natasha. I was diagnosed around the same time as you, and um, तब ये जो वर्ड्स थे नहीं हुआ करते थे. बोलस वाज नॉट अ कॉमन टर्म. आई मीन आवर फ्रेंड्स दैट आर वेटरन्स in T1 or in insulin dependent diabetes will tell us that bolus, basal ये words नहीं थे. We would just say, I'm going to take my insulin or I'm going to take my act rapid or regular or whatever. So what is bolus exactly? Urvashi, is that like something you want to start off with? बोलस कहें या फिर प्रीमील इंसुलिन होता है या फिर समथिंग विच इज शॉर्ट एक्टिंग विच स्टेज इन योर बॉडी कुछ घंटों तक. यूजुअली जब हम मील्स लेते हैं उसके बिना अगर हम मील लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे ब्लड शुगर लेवल काफ़ी स्पाइक हो जाते हैं. तो बोलस इज समथिंग जो शॉर्ट एक्टिंग काम करता है. आप लेते हैं, कुछ मिनट वेट करते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा इंसुलिन आप लगा रहे हैं, और जब आपका शुगर एक लिमिट में आ जाता है देन यू स्टार्ट ईटिंग. सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बोलस. ऑल्सो मेरे लिए भी एक नया टर्म था. पिछले साल तक मुझे भी पता नहीं था कि बोलस बेसल करके भी कोई शब्द होते हैं. डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद पता चला कि ओके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी, जैसे मेरे फादर हैं, मेरे मदर इन लॉ हैं, वो लोग इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन उनके मुँह से हमने कभी नहीं सुना वो लोग टाइप 2 है, तो उनको यूजुअली 1 दिन का इंसुलिन लगता है. जबकि जो हम टाइप 1 होते हैं या फिर कुछ और लोग भी जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, उन लोगों को मल्टीपल इंजेक्शंस लेने होते हैं. तब जाके पता चला कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ बोलस एंड व्हाट इज़ बेसल. Correct. Yeah, thanks Urvashi. I think that's very true क्योंकि हम लोग घर पे जो एल्डर्स हैं जिनको जानते हैं, जो जिनको टाइप 2 हो या जो लोग वंस अ डे इंसुलिन लगाते हैं, like काफी बार they either use Mixtard or they use some other type of insulin than what we are used to. And I can see Natasha's comment as well, and she says all of this is very new terminology. It's like learning a new syllabus.
That's absolutely true, you know, and every day I feel like आज मैं नींद से उठूं और एक नया मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट मेरे सामने है कुछ things are going to happen and I'm going to have to adjust my doses and my plan and my learning and all of these things. Rimi says, I learned these words through the community. Rimi, same here. I also learned these words, you know, through our community. Bolus is not a word that I used to use for the longest time. So anyway, well, you know, talking about the types of bolus, all of those of us that are on insulin, I would encourage all of you in the comments to share. आप कौन सी insulin use करते हैं? Let us know what bolus insulin you use. Now we all know that खाने से पहले वाली इंसुलिन को हम bolus बोलते हैं, जिससे हम करेक्शन लेते हैं उसको हम bolus बोलते हैं, like Urvashi mentioned. So I'll tell you about mine. I use NovoRapid, and I also use ActRapid. So these are the two types of bolus insulins that I use. Urvashi, आप कौन से insulins use करते हैं bolus के? मेरे पास भी एक्ट्रापेड है, मैं वो यूज़ करती हूँ शॉर्ट एक्टिंग के लिए. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इज इट विजिबल? या Yeah. थोड़ा सा. हाँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये येलो वाला जो है, दिस कलर इज फॉर एक्ट्रापेड. और नोवो की दूसरी जो आती है पेनसिल्स, तो उन सब का कलर अलग होता है, जिससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी वाली है. जैसे ट्रेसिबा का कलर ग्रीन आता है, नोवा रैपिड जो पेनसिल वाली है उसका कलर येलो आता है That's उसके पेंसिल पे. तो उससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कलर से भी कि आपकी शॉर्ट एक्टिंग है या फास्ट. बिकॉज मेरी बोलस बेजल दोनों यही तरीके की सेम पेन है, तो कभी कभार क्या होता है कि नहीं मिक्सअप भी हो सकता है आइडिया ऐसे. तो ये चीज़ रहता है कि आप कलर भी याद रखेंगे तो उससे थोड़ा इजी रह जाएगा कि आप बोलस की जगह बेजल ना लगा दे कभी गलती से. correct. बिल्कुल, बिल्कुल. And I'm really amazed, you know, within the community also इतने सारे अलग-अलग टाइप के not just insulins, लेकिन इंसुलिन लेने के तरीके भी इतने अलग-अलग हैं. उर्वशी ने अभी अपना पेन दिखाया और मैंने कभी पेन यूज़ नहीं किया है. मैंने पंप यूज़ किया है और सिरिंजेस यूज़ किए हैं और अभी मैं वापस से सिरिंजेस ही यूज़ करती हूँ. बट आई कैन रिलेट टू दिस, यू नो, व्हाट यू सेड अबाउट कभी गलती से अपना बेसिल ले लिया अगर बोलस लेना था. So that is something that I can see in the comments a lot of people mentioning what type of insulin they use. So thank you for sharing, right from Humalog to NovoRapid and Fiasp and Apidra. Rimi is also saying कि Fiasp का जो cartridge है वो red color का है. That is interesting. एंड चिराग, थैंक्स फॉर दैट रिमाइंडर. आप जो लोग नहीं जानते हैं, ब्लू सर्कल स्टोर के स्टिकर्स जो हैं वो आप अपने पेन पे लगा सकते हैं. यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन योर बोलस एंड बेसिल. एंड दीज स्टिकर्स हैव आल्सो बीन डिजाइन्ड बाय रोहन, हु इज T1 हिमसेल्फ. सो रियली रियली क्यूट स्टिकर्स. बोलस इज शॉर्ट एक्टिंग, तो उसमें एक स्क्विरल का डिजाइन है, ड्राइंग है. और बेसिल इज लॉन्ग एक्टिंग, तो जो लंबा वाला जिराफ होता है, that is the symbol for basil. So it's not just fun for kids but also as adults. I think it's a very cute way to remember which insulin is which, and just paste it on your pen and never inject the wrong type of insulin. Natasha का मैसेज मुझे दिख रहा है, Novo Rapid on 780G Medtronic pump. That's interesting. Previously she was on Mixtard, which also worked very well. Okay, another comment. Once I used Apidra at bedtime and it was horrible. Can you tell us more? Why was it horrible for you? Did you get a hypo? What happened? And while you do that, we will begin by also talking about the potency of insulins. Insulin comes in 40 IU, which is, I think, Urvashi, are you using the 40 IU wala Actrapid or? नो, द पेनसिल इज 100 IU वाला. वायल के Right, जो आते हैं यूजुअली वो 40 IU होते हैं. correct. So, like Urvashi mentioned, Actrapid जो है वो जो वायल में आता है is 40 IU वाला, and जो ऐसे cartridges में आते हैं और जो pens में use होते हैं वो 100 IU के हैं.
Again, Novorapid, Fias, and Humalog, Apidra, all of these are 100 IU insulins. Now there are two types of syringes. This is one. I don't have the other one handy with me right now. I I forgot do to. have Okay, perfect. I do have both of them. Yeah, here you go. Yeah, thanks, Urvashi. Is it That is visible? super. Yes, it's visible. It's perfectly visible. So जो लाल कैप वाला सिरिंज है, वो 40 IU का है. 40 जो IU. Yes, and जो orange cap वाला है वो 100 IU का है. Now, why is it important to distinguish between the two types of insulins? Because these are of different potencies, right? And अगर आप इसको if you cross it up and you mix it up in some way, अगर आप 100 IU का इंसुलिन आप 40 IU के इंसुलिन सिरिंज से लो, और if you do vice versa, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा. You will either get 2.5 times more insulin or 2.5 times less insulin, depending on which combination you use. So Right. ये एक बात है बोलिस इंसुलिन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्पेशली फॉर दोज ऑन सिरिंजेस. एंड कई लोग सिरिंजेस, बहुत से लोग पेन्स यूज करते हैं, येस दैट्स ट्रू, बट ऑल्सो सिरिंजेस आर ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज. So very important to remember that do not mix and match. Always try to keep the right type of like 100 with 100 and 40 with 40. Sometimes we all land up in a situation where we forget something, और हम कहीं ऐसे कोई लोकेशन पे होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती है. देन वी मैसेज ऑन द ग्रुप सेइंग क्या कन्वर्जन है और मुझे कितने यूनिट लेने चाहिए, बट दैट्स अ सिचुएशन दैट we must avoid getting into. All right. I see Rajiv ji's message. He says, I use pre-filled Rhizodeg, which is blue color, and Fias, which is orange color. Orange color. Okay, that's interesting. Natasha has a question. She says, I'm curious to know that you're back on syringe. Was that after trying a pump? And if you don't mind sharing, yeah, sure. Very quickly, I'll explain why I did that. So I used a pump for about, I think, 5-6 years. And I used the basic model, the 722, Medtronic 722. My pump actually had some trouble after a couple of years. It wouldn't give me a no delivery alarm, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मेरे sugars were not being controlled. I could tell that the pump wasn't able to successfully deliver the insulin, and this went on for a few days, a few weeks. And so I thought, let me take a pump break. Let me go back on MDI, and during those 5 or 6 years, I didn't have the opportunity to use syringes, so I was a little bit nervous. Will I remember how to take a shot and silly things like that? But then I got back to syringes, and I have the same sort of management and control, and blood sugars and A1Cs on syringes. So I figured I'm just going to continue using syringes, uh, until I feel like it. So also, obviously, the pump has a very obvious sort of cost implication. So it's a pretty expensive device to not just purchase but also continue using with the patches and whatnot. So I just find syringes cheaper, and also gives me the same results. Hey, I got aware when I just injected 2 hours before I had used Apidra. I took juice and lots of sweating and palpitation, and got settled at 4 a.m. Uh, okay, so I think one of the major sort of fear, and a real fear at that is of hypoglycemia with bolus, right? हम लोग जो इंसुलिन लेते हैं, obviously hypoglycemia का risk हमेशा होता है. So Urvashi, how do you manage that kind of? How do you like try and avoid getting a hypo? Avoiding hypos is usually well, कैसा रहता है कि कई बार रात को हो जाता है. जैसे अभी कुछ दिन पहले CGM लगाया हुआ है, तो पता चला कि एक रात को पिछले 2-3 घंटे तक शुगर लो रहा और पता नहीं चला. और फिर सुबह को अचानक आँख खुली, तब मुझे फ़ील भी हुआ कि हाँ, आई एम हैविंग अ हाइपो एपिसोड. And suddenly I just went to the kitchen. I got my sugar biscuits, and then I just ate them.
बट स्टिल हाइपो का जो कंडीशन होता है उससे नॉर्मल आने के लिए आपको आराम से 30 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो यही रहता है कि अगर आपके पास सीजीएम लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि वो 80 से डाउन जाने वाला है, तो आप तुरंत ही उसको थोड़ा सा कुछ मीठा खा के उसको वहीं पे रोक सकते हैं। उसका वेट नहीं कीजिए कि वो बहुत नीचे जाए। जो लोग सीजीएम लगा रहे हैं, इट इज़ टोटली बेनिफिशियल कि हमको हर 5 मिनट का रीडिंग मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है सबके लिए। करेक्ट। और लेट्स से कोई लोग सीजीएम नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी आपको डायरेक्शन दे, मतलब इट इंडिकेट्स कि हाँ अभी थोड़ा लो हो रहा है, तो आप उस टाइम पे प्रिक करके अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, या फिर जस्ट एक बिस्किट खा लीजिए जिससे काफ़ी हेल्प हो जाता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। आई मीन जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जैसे उर्वशी ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्विकली ट्रीट इट, क्योंकि आई कैन सी इन द कमेंट्स आल्सो, यू नो, दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स दैट हैव हैड इट, it causes definitely a lot of distress, sweating, palpitation. I mean, you can also uh, you know, become unconscious, you can slip into a coma. There's a lot of things that can happen if you get a hypoglycemia and you don't treat it on time. One of the things that works for me to avoid getting a hypoglycemia is, um, and you know, I know some people are going to think she always talks about low carb, and you know, it's just like for everything the answer is low carb. But let me tell you, because I do low carb, because I'm eating less carbohydrates, I'm using a little less insulin than I would use for, let's say, अगर मैं बिरयानी खाती तो मैं मुझे थोड़ा ज़्यादा इंसुलिन लगाना पड़ता, लेकिन अगर मैं सिर्फ चिकन खा रही हूँ, बिरयानी में से मैंने अगर सिर्फ चिकन निकाली है और मैं वो खा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा कम इंसुलिन लगाना पड़ेगा। अब जब मैं कम इंसुलिन लगाती हूँ, मुझे हाइपो आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट? दैट्स जस्ट लॉजिक राइट देयर। लेस इंसुलिन, लेस चांस ऑफ हाइपर एंड हाइपो बोथ। सो that's something, that's a hack that I find pretty useful, that you know, eating little lesser carbs gives you that sort of buffer, you know, even if you go wrong आधा एक यूनिट ऊपर नीचे, बहुत बड़ा हाइपो नहीं आ जाएगा, you know, you can manage it. I can see Natasha's comment, and she says, I have taken short acting by mistake one time instead of long acting, and then I have to be ready to eat pizzas for the next few hours. That sounds like इट साउंड्स लाइक अ फीस्ट कि हाँ चलो आज फीस्ट करेंगे हम। एक जबरदस्ती का फीस्ट हो जाता है। उर्वशी, has that happened with you? Have you like गलती से smoke? नो, नेवर नेवर। एक बार मैंने गलती से उठा ली थी, फिर अचानक आई रियलाइज कि नहीं ये मेरा बेजल है, बोलस नहीं है, फटाफट चेंज करो, थैंक्स टू द स्टिकर आई हैव यूज्ड। तो उससे काफी हेल्प रहा। क्योंकि हाँ कई बार वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड, बहुत सारी चीजें चल रही होती, तो मिस्टेक होना जायज है, हो जाता है कई बार, पर थैंकफुली बोरस बेजल का मिक्सअप नहीं हुआ है आज तक। Touch wood, I hope it stays that way. बट ये आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर उर्वशी ने दिया है कि मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं माइंड में, और एक टाइम पे हम लोग 100 चीज़ कर रहे होते हैं साथ में, तो हो जाता है कभी कभी। डोंट वरी, अगर ऐसा हो भी जाए तो यू नो, डोंट स्ट्रेस, डोंट बीट योर सेल्फ अप। I've had parents calling me and crying over the phone कि मैंने गलती से लैंटिस की जगह मैंने नोवो रैपिड दे दिया, एंड यू नो, लाइक tears are streaming you know, down the faces of the parents, and I can understand that feeling of guilt. But please don't you know, feel that way, because we are only human, and I think caregivers especially have a very tough job to do. So very important to give yourself a little, cut yourself a little slack. हो सकती है गलती। Puneet ka question hai, and he says, do certain foods call for specific type of bolus? I think that's a great question. Or does the bolus have to be maintained irrespective of the food we eat? And I think this also links back to what Ravinder was asking a while back, कि हम कैसे manage करें खाना और bolus. So Urvashi, you want to share your experience first, then I'll go next. श्योर। सो यूजुअली क्या होता है कि मुझे डॉन फिनोमेनन भी है, यानी सुबह उठती हूँ मैं और बिना कुछ खाए, बिना कुछ, सिर्फ पानी पिए
तो भी शुगर ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती ही रहती है। और इंसुलिन लेती हूँ, उसके एटलीस्ट 45 मिनट्स तक मैं कुछ भी नहीं खा सकती, क्योंकि इंसुलिन जब तक मेरे ब्लड वेसल तक पहुँचता है, जब तक हम वो पीक टाइम तक पहुँचते हैं, आराम से 45 टू 60 मिनट्स मुझे लगता है टू स्टार्ट ईटिंग। तो मेरा एक स्टैंडर्ड मैंने रखा है, और कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि व्हेन आई टेक लार्जर इंसुलिन शॉट, लेट्स से 12 यूनिट्स, मुझे अगर लग रहा है कि मैं ज़्यादा कार्ब होगा मेरे खाने में, तो मुझे 12 यूनिट लगाना चाहिए। पर कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब 5 यूनिट वाले शॉट काम करते हैं ना, वो 12 यूनिट वाले शॉट भी नहीं काम करते, विच मीन्स इट्स वेरी ट्रिकी ऑल द टाइम। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच कि आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को समझ के, और किस तरह से आपने पास्ट एक्सपीरियंस लिया है खा के, उसके बेस पे अगर आप अपने शॉट्स को मेंटेन रखेंगे, टाइट्रेट करेंगे, तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। हर बॉडी अपनी तरीके से काम करती है, और ऑल्सो स्ट्रेस लेवल भी काम करता है कि आपका माइंड कैसा चल रहा है अभी, आपका क्या फ्रस्ट्रेशन है, या फिर आप हैप्पी मूड में हैं, उससे भी आपका इंसुलिन का जो पीक टाइम है और प्री बोलस टाइम है, वो भी काफ़ी, इट ऑल गोज हैंड इन हैंड। So Yes. all these things matter a lot. So usually I take 45 to 60 minutes. That is my pre-bolus time, because right now I am relying upon Actrapid, और Actrapid थोड़ा समय लगाता है to reach blood vessels and peak time पे पहुंचने के लिए। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं स्टैंडर्ड एक 10 यूनिट में रखती हूँ कि अगर थोड़ा कार्ब है फूड में, वो होता ही है थोड़ा कार्ब, तो और प्रोटीन ऐड करने का वो भी कोशिश करती हूँ। जैसे सुबह में आई वुड प्रेफर टू ईट विथ एग्स, एनीथिंग प्लस एग्स, तो उससे क्या रहता है, बैलेंस हो जाता है। एंड इवन इफ आई हैवंट वर्कड आउट, लेट हो गया है, वर्कआउट नहीं किया है, तो स्टिल इट बिकम्स समवॉट मैनेजेबल। Correct. तो Great. प्रोटीन ऐड करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके हर मील पर। करेक्ट। एंड हम लोगों को सिखाया जाता है कि कार्ब काउंटिंग करो, क्योंकि कार्ब्स के लिए आपको इंसुलिन लगाना है। लेकिन बहुत से बार हमें ये नहीं बताया जाता है कि प्रोटीन और फैट का भी इम्पैक्ट पड़ता है शुगर्स पे, सिर्फ कार्ब्स का नहीं पड़ता। जैसे उर्वशी ने कहा, ब्रेकफास्ट में शी ऑलवेज मेक श्योर टू ऐड इन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। सो यू हैव टू, आप जितना अपना शुगर नापेंगे, आप चाहे ग्लूकोमीटर पे चेक कर लो, चाहे सीजीएम पे कर लो, स्पेशली फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स, टू बी एबल टू चेक योर शुगर मल्टीपल टाइम्स अ डे, you just can't manage without that. You'll not, it's like shooting in the dark. आपको पता ही नहीं आप कितने यूनिट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। एंड आई थिंक हम सब ने ये एट सम पॉइंट किया है। एंड आई सी चिराग्स मैसेज दैट रियली ग्रेट जॉब उर्वशी, एक साल में you have really figured out so many things, and hats off, because I know I've really bhatkawed and not done things the right way, not wanted to learn the right way. So it's amazing that these things you've quickly sort of taught yourself and taken the effort to learn. Another wrench that gets thrown in, especially for women, इज दैट जब लेडीज को जब पीरियड्स होता है, तो पीरियड्स के कुछ दिन पहले भी शुगर बढ़ने लगती है। तो मतलब दिस इज अनदर फैक्टर अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट उर्वशी मेंशन्ड अर्लियर, कि क्या रीजंस हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट अमाउंट ऑफ बोलिस आपके बॉडी को की बॉडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो देयर कैन बी वेरी मैनी रीजंस। लेकिन to answer Ravinder's question, the very easy and obvious low hanging fruit जो है वो है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंसुलिन। लाइक दैट्स अ नो ब्रेनर। आपको पता है कि अगर आप 5 रोटी खाने वाले हो, आपको ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है, वर्सेस अगर आप सिर्फ एक ही रोटी खाने वाले हो, आपको कम इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। राइट? सो दैट इज one basic sort of parameter. And like Urvashi said, the best way to do it is to keep doing that trial and error, right? आप आज अगर खाना खा रहे हो तो डिनर के पहले आप चेक कर लो कितना शुगर है, then you have your dinner, take your shot, I mean take your shot, have your dinner, and then after 2 hours check again, and if it works out and if your sugar is in range, congratulations, and that's a successful experiment. So we have to keep doing this every single day. अलग खाना होगा, अलग सोशल सिचुएशंस होंगे, कभी आप बाहर जाओगे, कभी शादी पे जाओगे, कभी आप ट्रैवल करोगे, एंड हर टाइम अलग अलग कुछ सिचुएशन होगा, कुछ खाना होगा, वेदर होगा।
इवन वेदर से शुगर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? आई मीन पिछले संडे वी हैड अ वर्कशॉप ऑन समर एंड डायबिटीज, एंड उसमें केतकी और नीरज ने बात किया था। अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो आप यूट्यूब या फेसबुक पे जाके वो वर्कशॉप भी देख सकते हैं। समर्स में मेरी शुगर्स बढ़ जाती हैं ज़्यादा, यू नो. So I need a little more of bolus. I need a little more of basil also, and that's something which I was only able to figure out with trial and error. अगर मैं sugar check नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता. I see Usha's question. Why am I not using pens? Actually, जब मैं diagnose हुई थी 28 साल पहले, उस टाइम पे पेन्स नहीं थे, सिरिंजेस ही थे, और मैं सिरिंजेस से काफ़ी खुश रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. So this is why I never shifted to a pen. Also, I kind of feel like the pen, I don't know. I mean, Urvashi, you share your experience as well. I've never used it, but I feel like it's a mechanical thing, right? कभी उसका वो स्प्रिंग खराब हो गया, कभी कुछ हो गया. How do you know कि वो इंसुलिन अंदर जा रहा है? मतलब मेरे लिए that 1 unit is make or break. I can't afford to. So that's also something in my mind. This is another reason why I don't want to move to a pen. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू चिराग. काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और यस बहुत सपोर्ट रहा है हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से, ऑल्सो ब्लू सर्कल कम्युनिटी की तरफ से, जिसकी वजह से इतना कुछ इतने कम समय में जानने को मिला है. और यस बात आती है पेन की, तो मैं कुछ महीनों से पेन पे शिफ्ट हुई हूँ. उससे पहले मैं भी सिरिंजेस यूज़ कर रही थी. तो सिरिंज में ये रह रहा था कि मुझे एवरी टाइम पेन होता था जब भी मैं सिरिंज यूज़ करती थी. पेन यूज़ करने के बाद पहली चीज़ है कि उसका नीडल अल्ट्रा फाइन है, तो वो इजीली अंदर जाता है, इतना दर्द नहीं होता. लेकिन हाँ, जब इंसुलिन अंदर जाता है तब थोड़ा ऐसे एक बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है कि हाँ अंदर गया है. तो वो चीज़ एक रहता है मुझे पेन से अभी भी. बट येस, सिरिंजेस यूज़ करना वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है. इट्स नॉट दैट अल्ट्रा फाइन निडल, तो वो चीज़ की वजह से काफ़ी मे बी. एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्किन सेंसिटिविटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज़ व्हाट आई थिंक. तो अगर स्किन सेंसिटिव है तो डेफिनेटली यू कैन शिफ्ट टू पेंसिल. थोड़ा सा रेंज उसका डिफर करता है वायल और उससे, बट अगर आप यूज़ करने लग जाते हैं और इट्स वेरी इजी टू यूज़. कहीं पे भी आप जैसे कहीं बाहर है, आपको वायल में से यूज़ करना है तो पहले आपको सिरिंज फिल करना पड़ेगा, आप स्वॉब निकाले यूज़ करें. पेन फिल ऑलरेडी इट्स प्री फिल्ड, तो आपको बस सिर्फ यूनिट एडजस्ट करने हैं. और लेट्स से अगर आपका ये पेन फिल ख़राब हो जाता है, कभी स्प्रिंग का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये 100 यूनिट वाला जो सिरिंज है, ये ऑरेंज कैप वाला, इज इट विजिबल? हाँ, Yeah. दिस वन, ये वाला जो है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अपने कार्ट्रिज से फिल कर लीजिए जितना भी यूनिट आपको लगाना है और आप उसे यूज़ कीजिए. ये आप बैकअप के लिए रख सकते हैं इन केस अगर आपका पेंसिल कभी कुछ प्रॉब्लम देता है कोई भी रीज़न से. तो Correct. क्योंकि ये वाला 100 आयु वाला है, तो दिस विल बी इजीली आपको कोई 2.5 वाला टाइम्स वाला कोई मैथ नहीं करना है इसमें. आपको जस्ट इसमें फिल इन करना है जितने यूनिट्स चाहिए और आप ये यूज़ कर लीजिए. Correct. And this is what I love about the community. हर किसी का अलग व्यू पॉइंट है, हर किसी का अपना स्टाइल है और अपना मतलब एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज व्हाट रियली मेक्स इट सो डाइवर्स एंड अमेजिंग. नताशा का कमेंट है, एंड शी इज आस्किंग दैट पंप इन्फ्यूजन साइड से स्कार टिश्यू बढ़ जाता है क्या, एंड कैन इट डैमेज द स्किन? And I think this is another really important point. I forgot about it, so thanks Natasha for bringing it up. इंसुलिन हम चाहे सिरिंज से लें, पेन से लें या पंप से लें, देर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड लाइपो और लाइपो हाइपरट्रोफी, विच इज बेसिकली अगर आप बार बार एक ही जगह अपना इंसुलिन लगाएं, तो वो जगह थोड़ी सी स्वोलन हो जाती है, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वहाँ फिर दर्द नहीं होता है. तो ऑफन टाइम्स बच्चे जो है वो बार बार एक ही जगह इंसुलिन लगाते हैं बिकॉज इट्स नॉट हर्टिंग देयर, बट एक्चुअली द इंसुलिन इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली. एंड पंप के साथ ये भी इशू है, स्कार टिश्यू भी हो जाता है. सो दैट इज ट्रू. आई थिंक द ओनली थिंग वी कैन डू इज कीप रोटेटिंग द साइड्स, बार बार जगह चेंज करना. तो मैं अभी अपने स्टमक पे लेती हूँ बोलिस शॉट, और मेरा बेजल मैं थाई पे लेती हूँ.
और जब मैं पंप पे थी 5-6 साल, तब मैंने थाइस को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिकॉज माई थाइस हैड a lot of lipo. They were like really swollen, like you could see it through. I mean, if I wore shorts or jeans, you could see it through the clothes that it's kind of swollen. And so about 5 years I didn't use my thighs, and then abhi wapas se I'm using my thighs for my basal short. So those of us that are watching can also share in the comments आप क्या साइट यूज करते हो आपके इंसुलिन के लिए. उर्वशी, व्हाट अबाउट यू? वेयर डू यू टेक योर शॉट? I use hands, my arms, stomach, thighs, buttocks, every place, so that it becomes a diverse place to not have those kind of, because it also feels a lot of pain. Also the tissues, I think inside the skin, वहाँ पे कुछ तो इफेक्ट आता ही है जिसकी वजह से वो दर्द होता है. अभी 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि मुझे कुछ थोड़ा छोटा-सा ही शॉट लेना था और आई यूज्ड माय पेन टू टेक दैट बोलस शॉट. 3-4 यूनिट लेना था, लेकिन जैसे ही बाहर निकाला पूरा ही सब बाहर आ गया. इट डिड नॉट एब्ज़ॉर्ब. तो एक चीज़ वैसा रहा था कि मे बी वहाँ पे ऑलरेडी स्कार हुआ होगा, तो उस वजह से दैट पार्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द इंसुलिन. तो करेक्ट. वो इश्यूज भी रह सकते हैं कई कई बार अगर आप सेम स्पॉट यूज कर रहे हैं तो. करेक्ट, वेरी ट्रू. एंड अगेन दैट ब्रिंग्स अस बैक टू ब्लड शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब हो रहा है, इंसुलिन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या इंसुलिन आपने इंजेक्ट किया और निकल आया है, जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप शुगर चेक करें. बिकॉज हो सकता है बहुत से लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है जब शुगर हाई चली जाती है. एंड द डेफिनेशन ऑफ हाई इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, राइट? हम सब अलग शुगर लेवल पे अपना शुगर करेक्ट करते हैं. तो very very important to check your blood sugars. Akshara का question है, can you please talk a bit about extended bolus and combination bolus, and what foods can we use for it? So ये जो extended और combination bolus है, ये pump का feature है, and it's called also square bolus. And what is the other word for it? Maybe Natasha will remember. I'm just coming to a blank. So square bolus is one, and the other one is okay, still can't remember, but I'll wait for someone in the comments to tell me. But when do we use these sort of boluses? And well, one example is if you're at अगर आप कहीं function में हो और आप buffet खा रहे हो, and when people are in अगर कोई शादी में है या कहीं ऐसे कोई social situation में है जहाँ पे buffet पे जाकर के धीरे धीरे धीरे, मतलब 3 या 4 घंटे के दौरान लोग स्टार्टर्स खा रहे हैं या अपना लंच या डिनर खा रहे हैं. So for that kind of situation, an extended bolus is something that you can use on your pump. And the other type of bolus, which I cannot remember, that one is helpful for something like pizza, right? So pizza is a unique sort of food which a lot of us love, and it's also very tricky food to bolus for. तो पिज्ज़ा में कार्ब्स भी भर-भर के हैं, क्योंकि जो बेस है वो मैदे का बना है या व्हीट का बना है या जो भी, एंड उसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं अगर आप उसमें चिकन डालें या पनीर डालें, और उसमें काफ़ी फैट भी है, बटर होता है उसमें, घी सॉरी चीज़ होता है. सो फॉर समथिंग लाइक दिस दैट हैज़ a combination of macros, you can also use the other function where you take maybe 60% upfront, and then the remaining 40% of your insulin you sort of stagger it over the next couple of hours. So I hope that sort of answers your question, Akshara. Square and dual wave. So yeah, the one that I was forgetting was called dual wave bolus. Thanks, Natasha. So I'm also going to, circle back to our types of bolus, and I think the one main type is regular insulin, and how, and Chirag had also mentioned this, how is regular different from the other faster acting bolus insulins? And Urvashi, you've, been using regular since you were diagnosed. So how's Yes. that experience been? The experience has been like, it took me time to figure out कि you have to wait for a few minutes. You have to follow the concept of pre-bolus before having your meal.
तो ऐसा रहता है कि जो रेगुलर वाली इंसुलिन है दैट यूजुअली टेक्स अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम टू स्टार्ट एक्टिंग. इट टेक्स 30 मिनट्स ऑफ टाइम टू रीच योर ब्लड वेसल. उसके बाद वो जब पीक पे आता है कि हाँ दिस इज द लिमिट, आपका ब्लड शुगर लेवल लेट्स से 100-120 तक पहुंचा एंड देन यू वुड लाइक टू स्टार्ट ईटिंग, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है. आई थिंक जो रैपिड एक्टिंग वाली है इट टेक्स लेसर टाइम, which is like 15-20 minutes. I haven't used though, but what I have heard about, let's say जो रैपिड एक्टिंग वाली इंसुलिन है उसमें कम समय लगता है, लेकिन जो रेगुलर एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं विच इज़ एक्ट्रापेड, इंस्यूजन और काफ़ी सारी जो उस लेवल पे आती हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है. मेरे when I take it, I have to wait for 45 minutes. That is my pre-bolus time. तो 45 मिनट्स लेने से इंसुलिन लेने के बाद में आई स्टार्ट हैविंग माय मील. दैट इज Yes. हाउ आई यूजुअली डू. Correct. Very, very important point to pre-bolus, and something I really hate doing also, to be very honest. I just do not, like to pre-bolus. But I think it's so important because खाने से पहले की जो शुगर है, अगर वो बेस लाइन आपका रेंज में है, तो आपके खाने की बाद की शुगर भी देर इज़ अ हाई चांस दैट इट विल बी अंडर कंट्रोल, राइट? अगर आपके खाने से पहले की शुगर ही 200 है और आपने इंसुलिन लगा लिया एंड यू डिडंट वेट एंड यू स्टार्टेड ईटिंग, what is going to happen is your post meal is going to be extremely high because that 200 is यस. only going to keep climbing. So what हम्म. Urvashi said is pre bolus करना बहुत ही important है. And again everything depends on your blood sugar. So अगर आपकी sugar normal है, and again what do we mean by normal? So I think anywhere between, most people would do anywhere between 70 to 120, 130. That's the kind of acceptable range for a lot of people. And then you wait 30 to 45 minutes for regular insulin. So रेगुलर इंसुलिन की जो हम बात कर रहे थे, इसके कई सारे ब्रांड नेम्स हैं. जैसे उर्वशी ने बताया, देयर इज एक्ट रैपिड, जो बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, मेड बाय द कंपनी नोवो नॉर्डिस्क. देयर इज आल्सो इंसुजेन व्हिच इज आई थिंक बायोकॉन. उर्वशी वाज सेइंग बायोकॉन कंपनी का यस, है. बायोकॉन. उसके अलावा भी कई सारे नेम्स हैं. वन इज Human Prodica. Now, until a few days ago, I hadn't even heard of this. When Urvashi and we were discussing this for the workshop, is when I realized कि Human Prodica नाम का भी एक insulin है, which is by Nicholas Piramil, the company. There's also Human Rapidica. So there are बहुत सारे नाम हैं. And the easy way to understand कि ये कौन सा टाइप का इंसुलिन है, जब भी आप इंसुलिन के ऊपर जो उसका जो कार्टन है या जो बॉक्स है उसके ऊपर आप कॉम्पोजिशन पढ़ोगे, तो अगर उस पे रेगुलर लिखा हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द स्लोअर टाइप ऑफ बोलस, राइट? इट्स द टाइप ऑफ बोलस दैट इज गोइंग टू नीड यू टू वेट 30 to 45 मिनट्स बिफोर योर मील. नाम बहुत सारे हैं, मे बी 20 नेम्स, 20 डिफरेंट ब्रांड नेम्स, लेकिन टाइप ऑफ इंसुलिन जो है वो है रेगुलर. सो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर. इसके अलावा there are faster acting insulins, and of course one of them is Novo Rapid. Now Novo Rapid again is a brand name. Novo Rapid का जो type of insulin है, it's called Aspart. If you see the the carton, you'll find it written on the composition section, where it'll say that it's made of aspart. So that's again something to consider. The other types, and I saw people in the comments saying मैं Apidra use करती हूँ या Fiasp use करते हैं. Again Fiasp is comes under aspart. So Novo Rapid and Fiasp are both basically brand names for aspart insulin. um, which are the other ones? I've seen people say Humalog. Again, that's a brand name. And Humalog का जो insulin type है is called Lispro, right? So these are things to sort of keep in mind. There Even is a type. Yes. Fiasp is also the rapid acting one. Correct, correct. So, so I think very important to know what we are taking, क्योंकि हम ये खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं या खुद के फैमिली मेंबर्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है एग्जैक्टली?
पता है इंसुलिन है, डॉक्टर ने बोला है लेना है, हम आँख बंद करके ले रहे हैं, बट क्या हमने वो 5 मिनट निकाले हैं कि हम इंसुलिन के कार्ट्रिज पे या कार्टन पे क्या लिखा है वो पढ़ें? Okay, I can see Savita's message, and she's replying to Puneet that millets require slow acting insulin as a bolus shot because they have low glycemic index. तो यहाँ पे अगर और कोई भी millets खाता है तो अपना experience ज़रूर share करें. Savita's daughter is T1 OV and she's a great runner. एंड हरलीन का कमेंट आया है कि डाइजेशन टाइम ऑफ सम फूड्स आर डिलेड, सो हाउ डू वी मैनेज बोलिस? एंड आई थिंक रिसेंटली हमारे फेसबुक ग्रुप पे, और आप सब ये नीचे टिकर देख रहे होंगे, ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क इंडिया. तो अगर आप नहीं है हिस्सा ग्रुप के तो प्लीज डू जॉइन द ग्रुप. I saw a post recently that asked, and it was by the mother of a T1 child, and she wanted to know कि जब उनका बच्चा चिकन खाता है, his sugar ends up spiking late into the night when he has chicken for dinner. एंड ये बात सही है हरलीन की, कुछ खाने ऐसे हैं जो स्लोली शुगर को बहुत ग्रेजुअली शुगर्स बढ़ाते हैं. एंड वन ऑफ देम इज प्रोटीन. वन ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड दैट डज दिस इज प्रोटीन. सो पनीर हो गया या चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारे जो फूड्स हैं अगर आप काफ़ी क्वांटिटी में खाएं एज अ मील, इट्स गोइंग टू रेज योर ब्लड शुगर्स वेरी वेरी स्लोली. एंड आई थिंक ऐसे टाइप्स ऑफ फूड के लिए एक्ट रैपिड बहुत ही बढ़िया है. तो द रीजन आई यूज 2 टाइप्स ऑफ बोलिस इंसुलिन इज बिकॉज आई डू ईट, मे बी फॉर डिनर आई एम ईटिंग ओनली चिकन. एंड वो चिकन जो है अगर मैं अभी नोवो रैपिड मैंने लगा लिया तो नोवो रैपिड वर्क्स फॉर अबाउट 3 to 4 hours. लेकिन चिकन का जो स्पाइक है वो 2-3 hours के बाद शुरू होता है. सो बाय द टाइम माई नोवो रैपिड इज ऑलरेडी ओवर, लेकिन मेरा चिकन का स्पाइक अभी चल रहा है. तो उसको काउंटर करने के लिए रेगुलर इंसुलिन जो है या एक्ट रैपिड जो है, दैट इज अ गुड फिट. उर्वशी, हैव यू फाउंड दैट टू बी ट्रू फॉर सर्टेन यस, टाइप्स ऑफ? आई डू फाइंड इट ट्रू कि प्रोटीन स्पाइक लेट रहता है, तो एक्ट्रापिड जो है वो अराउंड 4 to 5 hours आपकी बॉडी में रहती है, मे बी मोर, इट डिपेंड्स. आपको वो चेक करना होगा. तो उस टाइम पे जो एक्ट्रापिड है वो ज़्यादा यूजफुल रहती है अगर आप सिर्फ प्रोटीन या फिर हाई प्रोटीन फूड ले रहे हैं. तो जैसे नोवो रैपिड आपने कहा, वो शायद 2 या 3 घंटे में भी असर दिखाना बंद कर देती है. तो आपको फिगर आउट करना होगा कि नोवो रैपिड ज़्यादा बेटर है या फिर फास्ट एक्टिंग और रेगुलर एक्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन द मील दैट यू टेक. Again, this is also trial and error kind of thing that you have to experiment on your bodies. Very true. Okay, I see a lot of comments, which is always a good thing, makes us happy. Um, how to bolus for high fat foods like fries or cheeseburger? This is a trick question, Akshara. And we can only try to answer it because I think nobody's perfect. We've all, experimented. But I think if I could quickly say one thing and before handing over to Urvashi, is that you may need a split bolus. So, पंप वाले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर और ड्यूअल वेव बोलिस का ऑप्शन पंप में होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो ऑन अ पंप. लेकिन जो लोग एमडीआई पे हैं, और व्हाट इज़ एमडीआई? मल्टीपल डेली इंजेक्शंस. तो चाहे आप पेन से लो या सिरिंज से लो, अगर आप पेन या सिरिंज यूज़ करते हो तो हो सकता है आपको शॉट को स्प्लिट करना पड़े, विच मीन्स दैट आप थोड़ा सा इंसुलिन अभी लगा लो और फिर कुछ देर बाद बाकी का इंसुलिन लगाओ. अब कितना इंसुलिन पहले लगाना है, कितना बाद में लगाना है, कितना गैप रखना है, ये सारा कुछ ट्रायल एंड एरर है. एंड इट विल डिपेंड ऑन आप क्या खा रहे हो, उसका कार्ब कंटेंट कितना है, उसका फैट कंटेंट कितना है. सो या, ओवर टू उर्वशी इफ शी हैज एनी मोर टिप्स फॉर. आई डू अग्री. अगर कार्ब कंटेंट ज़्यादा है तो आप बिफोर एंड आफ्टर मील करके भी इंसुलिन के डोज ले सकते हैं. लेट्स से 50-50 भी कर सकते हैं आप कि पहले, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यू रियली वेट फॉर योर शुगर टू कम डाउन टू लेट्स से 80 और 90. तो और तब आप अगर हाई कार्ब फूड ले रहे हैं तो स्पाइक होगा, डेफिनेटली होगा, बट इट विल मे बी रीच टिल 200-250. सो दैट वोंट बी लाइक कि हाँ 400 पे पहुंच गया एंड नाउ यू आर ऑल पैनिकी. तो दैट इज़ वन ऑल्टरनेट वे कि आप उसको और अच्छे से पूरा लो होने दीजिए एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग हाई कार्ब फूड.
Yes, Urvashi is a champion of pre-bolus. So, if there's one thing, the first thing, as a reminder, if I want to reiterate, it is कि pre-bolus करना है. And like Urvashi said कि जितना ज़्यादा आप high carb खा रहे हो, उतना be mindful कि आप ज़्यादा pre-bolus करो and start at अगर आपका baseline number ही is on the lower side, you don't have to be hypo, but if your blood sugar is 80, for example, which is a perfectly normal blood sugar, and you start eating at Yeah. that point, then that really works out better. I see another. Also, you can also go on for a run maybe, तो वो भी आपका बैलेंस कर देगा, या तो फास्ट वॉकिंग भी हेल्प करेगा कि अगर आपका शुगर हाई हो रहा है तो इट विल मैनेज टू मेक इट बैलेंस्ड योर शुगर्स. Correct. And on that topic of run and walk, I also see a comment that says कि workout का बहुत बड़ा effect होता है blood sugars पे. Very true. And that's I see this with myself. अगर मैं 4 या 5 दिन वर्कआउट नहीं करूँ तो छठे दिन जो है मुझे ज़्यादा इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. आई कैन सी द चेंजेस इन माई बॉडी एंड आई कैन सी हाउ माई ब्लड शुगर्स आर मच बेटर रेगुलेटेड with exercise. So definitely that's another thing. I think exercise का एक whole different अलग session ही होना चाहिए and हुआ भी है पहले, about how to manage for people on insulin who are also exercising. Are you eating a lot of mangoes? Savita is asking me. No, Savita, I'm not. मैंने मेरे लाइफ भर का कोटा जो है मैंगोज का वो खा लिया बचपन में और पहले, बट आई डोंट ईट मैंगोज नाउ. And I feel happy and content even without mangoes. But I know that a lot of our friends do eat mangoes and they are able to sort of manage very nicely with tips like pre-bolusing and things like that. Rimi says thanks Urvashi for sharing syringe के बारे में क्योंकि पेन के साथ she also had a problem one time earlier. Pradeep का question है, is it advisable to change the cartridge every month if there is insulin pending in the cartridge? उर्वशी आप क्या करते आई हो? डोंट थिंक सो. मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ और मेरी 10 दिन से ज़्यादा तो नहीं चलती. मैक्सिमम 12 डेज चलती है मेरी कार्ट्रिज. सो बट इवन बॉक्सेस पे लिखा है कि इफ़ ओपन आप 2 महीने के अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे मेरा एक फेज था जब मैं वायल और कार्ट्रिज दोनों के बीच में आई वाज जगलिंग अप. तो I try to finish that vial bottle within the span of 2 months. और boxes पे लिखा भी रहता है तो आप it's better आप वो disclaimer read कर लीजिए एक बार कि आप अगर ओपन कर लेते हैं उसका कैप तो आप कितने टाइम के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं. वो चीज़ आपको बॉक्स ही बताएगा. हर सिरिंज का हर इंसुलिन का अलग हो सकता है मे बी. Right. And like many times, it says कि 28 days में आपको opened insulin जो है discard कर देना चाहिए. लेकिन given that insulin is like इंसुलिन खरीदना सोने खरीदने के बराबर है, तो मैंने भी बिल्कुल उर्वशी की तरह कभी मेरा इंसुलिन डिस्पोज नहीं किया है. और मेरा मैं जो जैसे उर्वशी बोल रही थी वो पहले वायल एंड कार्ट्रिज में जगल करती थी, मैं अब भी ये करती हूँ. तो मैं वायल भी यूज़ करती हूँ, कार्ट्रिज भी यूज़ करती हूँ और मेरा वो टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म नहीं होता है जो रिकमेंडेड है. 28 डेज में डेफिनेटली नॉट. माई वायल लास्ट मी मैनी मैनी मंथ्स. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स टू कीप इन माइंड इज कि अभी गर्मी का मौसम है, आप इंसुलिन अगर घर पे हो फ्रिज में रखें, वो बहुत ज़रूरी है. एंड फ्रिज नहीं तो भी एटलीस्ट डायरेक्ट हीट में ना रखें. बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्री हो या कोई तो मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए जिसमें ड्यूरिंग ट्रैवल इट डजंट गेट स्पॉइल्ड. इफ इट्स नॉट स्पॉइल्ड इट्स एब्सोल्युटली ओके What I टू. use. यस, करेक्ट. अभी काफ़ी लोकल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं कूलिंग डिवाइस की तरह जो आप इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं. इंसुलिन बैग्स आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी इजीली मिल जाएंगे. I also have one more device to show. This is the one. If you can see. Yeah. या ये ओ इज इट Tickle टिकल? Flex. Yes, या this is Tickle Flex. So ये क्या होता है कि आप जब भी पेन यूज़ कर रहे हैं और आपको पेन से भी काफ़ी पेन हो रहा है, आप इसे अपनी बॉडी पे ऐसे पूरा अच्छे से उसे प्रेस कर दीजिए और फिर आप यहाँ से इंसुलिन का पेन डालिए.
इससे ऐसा रहेगा कि आपको पेन कम होगा, वो पूरा वैक्यूम बन जाता है और आप आराम से अपना इंसुलिन इसमें लगा सकते हैं। ये टिकल फ्लेक्स काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर आपको पेन यूज़ कर रहे हैं तो भी पेन है। सिरिंजेस पे ये नहीं सेट होता क्योंकि इसका जो सर्कल है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, सिरिंज सेट नहीं हो पाएगा। पर पेन्स के लिए दिस इज़ अ वेरी आइडियल थिंग कि you can use it, and that will be very painless insulin shot for you. That's a good tip, Urvashi, and it looks so cute. I mean, I was going to ask you if it kind Yeah, of tickles you yeah. to use it. Amazing, जो चीजें मतलब अवेलेबल है आजकल, इट्स रियली वंडरफुल टू सी दैट. नताशा सेज की साइट रोटेशन 10 इयर्स के लिए मैंने सिरिंजेस यूज किया थाइस पे, एंड देन शी आल्सो हैड लाइपो, एंड देन 5 इयर्स पेन. And now she uses the love handles on the tummy and the inner thigh. That's great. I mean, we have limited real estate on the body, right? आप कितना भी घुमा लो, घूम फिर के आपको वहीं पे आगे इंसुलिन लगाना है. तो रोटेशन बहुत ज़रूरी है. मैंने 2-3 दिन पहले दीपिका का पोस्ट देखा था फेसबुक ग्रुप पे, वेयर शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू मैनेज रोटेशन, एंड सम पीपल यूज एम एंड डब्ल्यू वाला सिस्टम. मतलब कि आप अगर आप अपने माइंड में एम ड्रॉ करो, या and you do that on your tummy, so you take your insulin in a m का डायरेक्शन, या तो आप अपना इंसुलिन डब्ल्यू के डायरेक्शन में ले सकते हो. बेसिकली आप एम डब्ल्यू ए बी सी डी कोई भी वे में लो, बट मेक श्योर कि आप इंसुलिन सेम जगह बार बार इंजेक्ट नहीं कर रहे हो. वो मेन टेक अवे है साइड रोटेशन का. So that is that. And I can also see, I had blue scars on my stomach after the injection, and thanks to my educator, I was able to, inject correctly. Very, very important. I think when we start injecting for the first time, डर भी लगता है, scars होते हैं, कभी खून निकलता है. So it's very important that we learn the right technique, so that, Another thing that we have to keep in mind is अगर हम muscle में inject करें गलती से, तब इंसुलिन कैसे बिहेव करता है वर्सेस अगर हम सबक्यूटेनियसली उसको इंजेक्ट करें. इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करना पड़ता है, विच मीन्स दैट इट नीड्स टू गो इनटू द फैट, नॉट इनटू द मसल. अगर आपने गलती से मसल में लगाया, योर ब्लड शुगर्स आर गोना फॉल लाइक दैट. You're going to tank, like you can potentially go from a 200 to 80 in a couple of minutes. और ये कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाए तो और डरावना है, क्योंकि you don't know what's happening, right? So it's very important that आप फैट में अपना इंजेक्शन, पेन, सिरिंज, whatever, या पंप करेक्टली सबक्यूटेनियसली आप उसको इंजेक्ट करें. So we've also covered the tickle flex. Punita ka comment hai, I use Apidra for my daughter. Can I use another one for correction so that it starts working faster? Now, neither Urvashi nor me have tried Apidra, which is another whole different type of insulin, which is also rapid acting, similar to Novorapid and Humalog and others. बट हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी ने एपिड्रा यूज करा है और कोई इंसुलिन यूज करा है, एपिड्रा वर्सेस नोवोरैपिड, अगर आपने ये कंपैरिजन किया है, तो कैन यू प्लीज शेयर इन द कमेंट्स, so that Punita or others who are planning to switch from Apidra have some sort of experience that they can pick up from your experience using both of these. Is it okay to use two types of bolus and a basal because she's small? Well, I'm big compared to your daughter, but I use two types of bolus. So I think if you, agar aap intelligently two types of bolus use करें, there is no problem at all. As long as you're not giving double the bolus, there's no issue. I know why I use two types of bolus: Act Rapid for protein and Novo Rapid for correction and for you know um, carbs. So that's my reason. You can figure out what reason you have for using two types of bolus, and then you can use it. Uh, any more questions? We are coming to an end. अगर किसी को कुछ सवाल हो बोलस इंसुलिन के बारे में, या कुछ हमने नहीं कवर किया है अब तक. We also, Urvashi, I think the cost of these insulins, right? मतलब Yeah. रेगुलर जो है वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है कंपेयर टू नोवो रैपिड या फियास. तो अगर आप किसी के थॉट्स हैं इस टॉपिक पे,
the cost of different types of insulin. Mixtard again is I think cheaper than many of these faster rapid acting insulins. Right. I can also see Savita's comment. She says high fat food के लिए split bolus works best. I absolutely agree. Because fat जो है वो आपका blood sugar का spike delay करता है. तो जब आप खाने में घी डालते हो या if you are having something fried, be aware that आपको अभी spike नहीं आएगा. हो सकता है कि आपको Hmm. 3 4 घंटे 5 घंटे बाद spike आ जाए. Add That Urvashi is true. to call. She's an absolutely delightful. I agree with Chirag. She's absolutely delightful. I've actually, had the good fortune of meeting Urvashi and Puneet, her husband, and they're a lovely couple. I met them in Ahmedabad a few months ago. Mindful. It's important to be mindful of freezing also. Natasha had visited the snow, Yeah. a place where it was snowing and vial थोड़ा सा freeze हो गया था and insulin was not working. Very true. I mean, हम लोग गर्मी की बात करते हैं but very very important कि cold climate में भी insulin का ध्यान रखें. 2 to Hmm. 25 degrees. That is the magic sort of range in which your insulin should stay. So Neha का comment है, how do you keep insulin those who do not have refrigerator? I am working in a government hospital, so many poor patients come who do not have refrigerator. नेहा ग्रेट क्वेश्चन. वन ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं, जो मटका है, अर्दन मटका जो होता है जिसमें हम पानी भरते हैं पीने के लिए ट्रेडिशनली, उसमें अगर इंसुलिन रखें तो और उसको उसके बाहर अगर आप गीला एक टावल रखें या गीला एक चादर रखें तो गर्मी के मौसम में वो भी एक ट्रिक है कि इंसुलिन को ठंडा कैसे रख सकते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है. तो वो एक है. दूसरी बात ये भी है, अगर आप किसी को मतलब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं एंड इफ यू फील लाइक दे रिक्वायर हेल्प, प्लीज reach out to us separately. We have purchased a small refrigerator for another young child, a T1, जिनके घर में फ्रिज नहीं था. तो it's definitely something we can look into. अगर छोटा सा फ्रिज लाके किसी को देना है, प्लीज लेट अस नो. वी आर हैप्पी टू हेल्प. पुनीता का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट द टिकल्स? Tickle, it's called Tickle Flex, and it's easily available on Amazon or any other site that you can check. तो आप एक बार टिकल फ्लेक्स गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी साइट्स मिल जाएंगे. अमेजोन पे ही मुझे एक दिख रही है, तो द सेम वन, तो आप अमेजोन भी चेक कर सकते हैं. थैंक यू. कुलजीत का क्वेश्चन है, नूपुर, डू यू यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन टुगेदर और एट डिफरेंट टाइम्स? Okay, great question. So it depends. I sometimes use two different types of insulin at the same time. And I'm just sharing my experience here. तो ये जो 100 IU वाला सिरिंज है, इसमें मैं क्योंकि मेरे दोनों इंसुलिन 100 IU के हैं, नोवो रैपिड बी और एक्ट रैपिड बी, मैं दोनों एक ही सिरिंज में ड्रॉ करती हूँ. Typically, if I'm eating a meal that involves, chicken and vegetables, or if it involves, what else can it be? Maybe it's a sabzi and chicken. तो चिकन के लिए एक्ट रैपिड काम करता है और सब्जियों के लिए नोवो रैपिड काम करता है. तो मैं सेम सिरिंज में दोनों ड्रॉ करती हूँ. एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई प्रेफर द सिरिंज, क्योंकि ये जो सारा जुगाड़ है ये सिरिंज पे हो सकता है. पेन पे आप ये 2 इंसुलिन को करना, ये करना, वो करना नहीं कर सकते हो. तो दैट पुनीत का क्वेश्चन आई थिंक हम लोग ने मिस किया. शुड वी टेक बोलिस व्हेन बीजी लेवल्स आर हाई एट द टाइम ऑफ बेसिल? व्हाट से उर्वशी? um, I think we can do that. We can Yes, try on that. If yes, if it's absolutely. basal time, we can definitely take a bolus after a few minutes, maybe. यस यस डेफिनेटली. मतलब कई बार ऐसे होता है, मैं मेरा बेसिल रात को लेती हूँ सोने से पहले, और दैट इज एग्जैक्टली द टाइम जब मेरा पोस्ट डिनर लेट स्पाइक हो रहा होता है कभी कभी प्रोटीन का. तो आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स वेयर आई हैव टेकन माय करेक्शन डोज इमीडिएटली फॉलोड बाय माय बेसिल शॉट, जस्ट मेकिंग श्योर कि वो अलग अलग लोकेशन पे है, कि मेरा बेसिल मेरे थाई पे है और मैं अपना करेक्शन बोलिस अपने टमी पे ले रही हूँ. तो एज लॉन्ग एज इट्स नॉट एट द सेम प्लेस, Hmm. इट बी फाइन.
All right. Savita saying matka in a pot filled with sand also works well. Yes, Yeah. absolutely. Okay, which pen do you use with Act Rapid, Urvashi? This is the pen by No. This is Novo Pen 4, the Acha. one that you can see. Novo Pen 4 है ये. Okay. Yeah. Yes, Is it approved. Yeah, visible? yeah, हाँ. yeah. That's visible. So और इसका mechanism काफी अच्छा है. So it's very good to use and easy to use. But again, cartridge to cartridge पेन का वो change होता है frame तो Novo Correct. पेन Novo के सारी cartridges इसमें you can fit in. Awesome. That's great to know. I guess thank you everyone for joining. Thank you, Urvashi, Thank you so much, everyone. for doing this with me, Yeah, and it was a wonderful session. वंडरफुल Thank सेशन you, रियली Nupur. थैंक रियली पहले मुझे लगा था कि जब हमने ये सोचा कि बोलिस पे एक सेशन रखते हैं मैंने कहा बोलिस पे 1 घंटा या मतलब 30-40 मिनट क्या ही बात करेंगे लेकिन देखो इतनी बातें हो गई इट्स बियॉन्ड एन आवर नाउ एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ वेरी यूजफुल टिप्स that everyone has shared so thank you all for एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज जो फेसबुक ग्रुप है डायबिटीज सपोर्ट नेटवर्क इंडिया वहाँ पे आप अपने सवाल और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं एंड इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ फन कैंपेन दैट्स रनिंग नाउ इट्स कॉल्ड शुगर डिटेक्टिव अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्लू सर्कल के देखा होगा शुगर डिटेक्टिव ये कैंपेन जो खाने में स्पेशली पैकेज फूड्स में अगर कितने कार्ब्स है कितना शुगर है क्या है जैसे मारी बिस्किट ही ले लो तो दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हम लोगों को आदत है कार्बोहाइड्रेट्स या इंसुलिन नापने की बट बहुत से लोग हु आर न्यू टू दिस मे नॉट नो राइट so if you share on the group or on your wall on Facebook or on Insta you could be the lucky one and once a week we feature somebody on all our platforms. So that's another thing. And that quick reminder to follow us on all our social media platforms. हम लोग Facebook पे हैं, Instagram पे हैं, YouTube पे हैं, Twitter पे हैं, LinkedIn पे हैं. So go everywhere, follow us, engage with us. Thank you so much once again. There's one last question Last from Neha. question. Yes. Urushi, you want to take that? How to put vial or cartridge inside directly, or do we need to cover with polythene? I'm exactly not getting it. Polythene का क्यों use करना है इसमें? हाँ, inside माने किसके inside? Fridge के inside, pen के inside? Hmm. And I think maybe Neha is asking about the pen. I'm guessing. I don't know. अच्छा डायरेक्ट मे बी शी मीन्स फ्रीओ में किस में डालना है तो मैं जब मेरे फ्रीओ में कूलिंग पैक में डालती हूँ तो मैं डायरेक्टली डाल देती हूँ आई डोंट पुट इट इन अ पॉलिथीन और जो ये वाले हैं लोकल वाले ये साइमन करके द वन आई यूज इट आल्सो हैज दिस ब्लैक पाउच वेर यू कैन पुट इट और उसके बाद इंसुलिन पाउच है विच मीन्स इसी में ही डबल पाउच रहते हैं देयर इज वन मोर पाउच इनसाइड राइट शी इज आस्किंग अबाउट द मटका तो मटके के अंदर ओके राइट मैंने पर्सनली नहीं यूज किया है मटका बट आई गेस एक मे बी पॉलिथीन में रख सकते हैं या एक डब्बे में रख सकते हैं पहले जब मैं फ्रिज में रखा आई मीन फ्रिज में अभी भी रखती हूँ लेकिन आई यूज टू हैव अ डब्बा फॉर माई सेल्फ दैट आई यूज टू कीप माई इंसुलिन एंड सिरिंज एंड एवरीथिंग इनसाइड तो आई थिंक कोई टपरवेयर का डब्बा या स्टील का डब्बा भी चल मे बी जाएगा स्टील का डब्बा भी चलेगा हाँ करेक्ट जो पतला स्टील है तो उससे जल्दी एब्सॉर्ब हो जाएगा उससे Yes, absolutely. So thank you so much once again, and थैंक यू पीपल do stay connected with us every Sunday at 5 p.m. Blue Circle workshops पे हम लोग मिलते रहेंगे. So thanks and have a happy Sunday everyone. Bye bye. हैव अ हैप्पी संडे बाय Bye.